के प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहाँ पे जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है 5.10 एंड देन सर्टिफिकेशन CSWA एंड यहाँ पे हिंट गिवन है द पाइप टेंजेंट टू द प्लेट। जो पाइप यहाँ पे इसके टेंजेंट पे है। ऑल द स्केच आर फुली डिफाइंड एंड दिस इज द वॉल्यूम। नाउ स्टार्ट। देखिए यहाँ पे सेंटर पॉइंट ये है तो यहीं से बनाना स्टार्ट करेंगे। सॉलिडवर्क्स स्क्रीन पर आते हैं यहाँ पे एंड देन मैं प्लेन लेता हूँ इसमें टॉप प्लेन एंड नाउ टेक सर्कल and draw the circle. Then again take midpoint line from here. Then draw this line. Then again add the relation. This is horizontal. Now again center point and select this point and add the relation vertical. Okay. Then again draw the circle on both the end of this line. Right click and take smart dimension and specify the diameter for this circle. This is 15 radius, 30 diameter. Okay. Then again now select this circle, and this circle at the relation which is equal. Now again take smart dimension, select the center point and add the distance. This is 60 and center to center distance this is 75. Okay. Now select this line and for construction. Now here sketch is fully defined and draw the tangent line on it. Select this line and hold the control key and the circle. Add the relation. This is tangent. Now same here. Tangent. Same here. Okay. And same here. Again, take trim entities and trim these entities. Okay. Okay. Then again trim these also. Okay, extend this line. Now trim it, take trim and trim this and this. Now draw the circle on this point, take circle and draw the circle here and here also. Right click and take a smart dimension. Specify the dimension. This is 8 diameter. Okay, 8 diameter. Now again select the circle, this circle and this circle at the relation which is equal. Okay. Then again देखिए यहाँ पे इसकी जो thickness है वो 10 है. Now right click and then exit from sketch, feature extruded boss face and blind and specify the width. This is 10. Okay. Now okay. तो बेस प्लेट यहाँ पे इसकी बन गई है. देन सेलेक्ट दिस फेस. देखिए यहाँ पे जो सर्कल है इसको ड्रॉ करेंगे. 21 डायमीटर एंड देन 32 डायमीटर के यहाँ पे सर्कल है ये. ठीक है. और देन ये इससे टेंजेंट है. ओके. टेंजेंट यहाँ पे इन्होंने बोला था कि पाइप जो है टेंजेंट टू द प्लेट है. सिंपल. नाउ सेलेक्ट दिस फेस एंड देन स्केच. ओके. टेक सर्कल and draw the circle here. Right click and specify the diameter. This is 32. Okay, and this is 21. Okay, then again select this circle, hold the control key and this line and add the relation. This is tangent.
Now select the center point, and this center point with hold the control key and add the relation vertical. Okay, this is vertical. हो गया. Then again convert these entities now simple and okay, and run these entities. Okay. Now right click, exit from sketch and extruded boss face. Okay, select this face, select it, contour and delete it. And now देखिए इसमें जो टोटल लेंथ है इसकी वो 85 है, ठीक है. एंड देन यहाँ पे जो वन डायरेक्शन है वो 30 एंड अनदर डायरेक्शन यहाँ पे 85 माइनस हो जाएगा उससे. तो वन डायरेक्शन में मैं इसको देता हूँ ब्लाइंड यहाँ पे. देखिए इसमें 85 माइनस 30. ओके, एंड देन जो डायरेक्शन 2 है वो देते हैं उसको यहाँ पे, देखिए सॉरी इसमें यहाँ पे डायरेक्शन 2 हो जाएगा आपका 30, ठीक है. बट यहाँ देखिए डायरेक्शन 2 ये ले रहा है, डायरेक्शन 1 ये ले रहा है, तो यहाँ पे मुझे 30 देना होगा. इसको 30 यहाँ दीजिए एंड देन यहाँ पे दीजिए आप 85 माइनस 30. आई होप कि क्लियर हुआ इतना आपको, ठीक है. नेक्स्ट, ठीक है. देन अगेन देखिए इसमें जो पोर्शन है ये पोर्शन को ड्रॉ करेंगे अभी यहाँ पे. देन अगेन यहाँ पे मैं लेता हूँ इसमें स्केच. ओके, sketch and select this place and then sketch. Now convert these entities now. Okay, and take line and draw the line from here to this point to this, and now okay, add the relation. This is vertical, and now select this line and add the relation horizontal. Then again simply take power trim and trim these entities. Now okay, and sketch is fully defined. Right click, exit from sketch and then extruded boss face and select this face and this face. Now change the direction and up to surface. Select this up to surface and select this surface. Now okay, yeah, आई होप कि क्लियर हुआ हो ये, ठीक है. देन यहाँ कंप्लीट हो गया ये. ओके, वॉल्यूम जो है इसका, इसमें देखिए यहाँ पे 105501 एंड देन इवैल्यूएट मास प्रॉपर्टीज एंड सेम इज 10550067 व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 01. या आई होप कि क्लियर हुआ हो. तो इसी तरह के मॉडल को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सॉलिडवर्क्स सीरीज को फॉलो करें. थैंक यू.